ठीक है। So hello and good afternoon. Welcome to the EduphoreIAS, the Hindu analysis class. And today, as usual, we'll be starting first with yesterday's questions and then we'll be discussing today's Hindu. So quickly, let us have a look at yesterday's questions. So first question is, a report titled Illegal Trade of Rats and Boa in India 2016-21 has been published by Wildlife Conservation Society. Is it correct? The second statement is the rats and boa is classified as threatened by the International Union for Conservation of Nature. So yesterday we discussed this topic and therefore based on our discussion the first statement is correct. Indeed, this report was published by this Wildlife Conservation Society. But second statement is not IUCN status of this rats and boa is not threatened, rather it's near threatened. Fine. So therefore second is wrong. So only correct option is one only. So A is the correct answer here. Second question is, the time has come for India to have regulations for AI in a manner that is consistent with the Indian ethos by and for Indians. You need to comment. 10 mark a question. We discussed yesterday's leading article on the editorial of the Hindu, and that was the need for an AI, an Indian system to regulate the AI. That is artificial intelligence. So yesterday we discussed this AI article in the binaries. You can say Western system versus the Eastern system. Fine. So Western system especially dominated by the this EU, Brazil, Canada particularly, and the Eastern system dominated, let us say till now, by the Japan and the China. Fine. So amidst all this, let us first go with the introduction following the same IBC structure. So intro, body and conclusion. So in this intro part, you can mention what the author has mentioned in this editorial. So for example, artificial intelligence is here to stay and it possesses the capability to fundamentally change the way in which we work. AI can also, by assimilation of data from multifarious online sources, present far more powerful solution than any human can, and therefore AI is a far greater force of either good or evil. Fine. So given all this, the need of R is to have an Indian based AI regulation, artificial intelligence regulation, or regulation for artificial intelligence, which is rooted in the Indian ethos, Indian ancient this legal system, and also it is to be made by Indians for the Indians. ठीक है कि हमारी जो AI रेगुलेशन है वो इंडिया से ही मतलब इंडियनाइज्ड होनी चाहिए, ये नहीं कि हम वेस्टर्न नेशंस जो कर रहे हैं उसे ही कॉपी करें. राइट. उसमें हम नीति आयोग की कुछ रिपोर्ट्स भी ऑथर ने मेंशन की थी कि कहीं ना कहीं वो भी जो 3 रिसर्च पेपर्स हैं नीति आयोग की सर्कुलेट हो रही हैं, वो भी मोर और लेस उनका भी जो नेचर है, जो फोकस्ड है, दैट इज ऑन द वेस्टर्न द सिस्टम मोर और लेस. सो उसको हम इमिटेट ना करते हुए हम अपनी जो रेगुलेशन है सिस्टम होनी चाहिए वो हम डेवलप करें खुद से. ठीक है. So therefore this should be the intro, that is again not more than 3 lines you can say, because this is a 10 marker questions. Then east is east and west is west. So here in the body part you need to firstly distinguish between the western system versus the eastern system. So what is western system, what is eastern system, we have already discussed this. Then yesterday we discussed the point of distinction between the two. So somewhat yesterday we discussed that the western system follows the risk based approach. Fine. While the eastern system focuses on the you can say societal based approach. Fine. So this is the first point of distinction that you must there must be this distinction in your answer.
Apart from that, another point of difference was that Western model is perfect for the West, of course, because it is in a clear set of rules and regulations, and it is expected that the Western people would abide by this set of rules and regulations. Okay. While Eastern model is more open and embraces the overlap between the legality, rules, and the morality. Fine. That is not the case with, you can say, Western system. Another point of distinction was that somewhat Western system focuses more on the means, while of course means to achieve the ends, while the Eastern system focuses more on the ends. ठीक है कि जो ends है, I mean जो रेगुलेशन के ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है, वो कहीं ना कहीं मोरली एंड लीगली डिफाइंड होनी चाहिए. ठीक है, तो सम वॉट मोरालिटी को भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी गई है. देन द अंडरलाइंग थेरीज की बात की गई थी, उसमें हमने देखा था प्रोफेसर स्पेशली नॉर्थरोप जिन्होंने एक फ्रेज कोट किया था, एंड दैट वाज कॉल्ड द हिंदू जूरिस्प्रूडेंस. ठीक है, सो उसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट आप एक चीज और मेंशन करना जरूरी है इसमें, दैट इज इन इंडिया our ancient legal systems were so profoundly successful because there was a clear indication of the end to be achieved as well as an underlying moral code, right, for achieving that end. So this is also another point which should form the part of your body of this answer. Apart from this, cue from the judiciary could also be undertaken. For example, you can mention the recently retired Justice V. Rama Subramaniam, who used the term from the Sanskrit called neti neti, meaning it is neither this nor that, but rather it should be our own. Fine, that is the Indianized one. Then of course you can conclude this answer on a positive or affirmative tone, or you can say the time has come for India to have regulation in a manner that is consistent with the Indian ethos by and for Indians. So let us hope that AI regulations is done better than indications suggest, and India must therefore look east and not the west, as suggested in the these 3 papers circulated in public by the Niti Aayog. Okay, so that's it, how you can conclude it. Fine, so that's it about yesterday's questions. 2 questions. Let us quickly start with the today's Hindu itself. So first page you can see तो कल एक OCCRP है, that is again this is not a good news for Adani group of companies, because after this OCCRP, that is Organized Crime and Corruption Reporting Project, investigations revealed fresh charges against the Adani group. ठीक है, फाइन. सो अब इसके कुछ पॉलिटिक्स होगी, ऑफ कोर्स होगी, सो उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है. एंड इन पे क्या एलिगेशंस लगाई गई हैं? सो OCCRP हैज alleged the round tripping, ठीक है, of millions of dollars. Now what is round tripping? ये वर्ड हमें I mean इस कंसेप्चुअल क्लैरिटी इसकी होनी चाहिए. तो राउंड ट्रिपिंग सिंपल सेंस में आप ये कह सकते हो कि सपोज होता क्या है कि सपोज कोई इंडियन कंपनी है, लेट अस से XYZ, उसने क्या किया कि मॉरिशस क्या है, यू नो कि टैक्स 7 कंट्रीज हैं, वहां पे टैक्स बहुत रेट्स बहुत कम है. ठीक है, तो इसलिए इंडियन कंपनी जो है उसने अपनी ब्रांच जो है वो ओपन कर दी कहाँ पे, एक मॉरिशस में, लेट अस से बाय एनी अदर नेम. एंड हुआ क्या कि यहाँ पे इंडिया में जो प्रॉफिट हुआ उसको राउट कर दिया उस कंपनी के यू नो दिस बैलेंस शीट में शो कर दी. मीन्स वहां ज्यादा शो कर दी क्योंकि वहां पे टैक्स कम देना पड़ेगा, यहाँ पे कम कर दी क्योंकि यहाँ टैक्स ज्यादा है. ठीक है, बट अल्टीमेटली हुआ क्या कि इस टैक्स को बचाने के लिए जो शिफ्टिंग की गई यहाँ से मॉरिशस की कंपनी जो इसकी खुद की एक ब्रांच है. ठीक है, सो अल्टीमेटली हुआ क्या कि यहाँ पे टैक्स तो सेव हो गई, बट लेटर ऑन क्या होगा कि वही पैसा दोबारा से राउंड ट्रिप की जाएगी उसी मनी को. ठीक है, मींस दैट्स व्हाई द नेम इज राउंड ट्रिपिंग, कि यहां से पैसा गया वापस आपकी ट्रिप करके वो इंडिया में आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है, सो समझ गए कि ओनली द पर्पस इज टैक्स सेविंग एक्चुअली. फाइन, सो दिस इज कॉल्ड राउंड ट्रिपिंग. एंड इस तरह की ही एलिगेशंस जो है वो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पे लगाई है, दैट इज OCCRP ने. ठीक है, उसके बाद स्टेटहुड फॉर जम्मू एंड कश्मीर में टेक टाइम, पोल्स कैन बी हेल्ड. कल हमने डिस्कस किया था कि CJI ने पूछा था सरकार से कि कब तक आप लोग यू नो स्टेटहुड कब तक ग्रांट कर दी जाएगी, जम्मू एंड कश्मीर को फुल स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर कर दी जाएगी, एंड इलेक्शंस कब तक हेल्ड किए जाएंगे. तो उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है.
Fine. The Indian government, however, said Jammu and Kashmir was ready to hold elections anytime now. कभी भी हो सकती है, but statehood में थोड़ा टाइम लगेगा. ठीक है. Supreme Court said that its inability to commit to an exact time period within which full statehood would be restored to the Union territory of Jammu and Kashmir. तो एक जगह सर्टेनिटी दिखाई है सरकार ने, दूसरी जगह समवॉट अनसर्टेनिटी है. उसके बाद ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ फ्रंट पे जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रू बाय 7.8% इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 मींस करंट फाइनेंशियल ईयर कंपेयर्ड विद 13.1% ग्रोथ इन क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23. कि अगर एक साल पुरानी सेम क्वार्टर के साथ रिमेंबर कंपैरिजन होती है क्वार्टर 1 की फाइनेंशियल ईयर 24 की, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर की कंपैरिजन जो हम किसके साथ कर रहे हैं, क्वार्टर 1 ऑफ द प्रीवियस ईयर दैट इज फाइनेंशियल ईयर 23. तो वहां पे ग्रोथ हमने देखी थी 13.1% की, बट अभी जो ग्रोथ है दैट इज 7.8% है. बट ये जो 7.8% है समवॉट सी कैसे ग्रोथ 21.5% से रिड्यूस होकर 13.1 हुई थी, उसके बाद फिर 7.8 हुई है करंट जून 21, जून 22 एंड जून 23. दिस इज द केस. The GDP growth recorded in the April-June quarter of 24, financial year 24, was the highest in the past 4 quarters. ठीक है, but this is the good trend that in the last 4 quarters we have registered for the first time the highest growth rate. Economies grow 7.8% fastest in the 4 quarters. You can see this. Okay, from here left side you have August rain the lowest in a century said by Indian Meteorological Department. ठीक है, and are natural disasters man-made? In question answer format we will be discussing this. Fine. So apart from this, nothing much important. Okay, so quickly have a look at the city page. After this, okay, so states page. So okay, so Madras High Court will be examining special court's verdict in all MPMLA cases. ठीक है, MPMLA जो भी क्राइम से रिलेटेड हैं उसमें फिर काफ़ी सारी आपको पता है बड़े सारे एमपीज और एमएलएस हैं जिनके खिलाफ केसेस चल रही हैं. ठीक है, स्टिल दे आर एमपीज एंड एमएलएस. तो उनके अगेंस्ट जो भी केसेस है मद्रास हाई कोर्ट उसको अब सुनवाई उस पर करेगी. उसके बाद Kerala CM warns society against those seeking to reinstate social evils. ठीक है, and he participated in the birth anniversary celebration of Sri Narayan Guru, जिन्होंने कि इस social evils के खिलाफ एक ज़बरदस्त कह सकते हो कि रेवोल्यूशन चलाई थी या एक मूवमेंट को लीड किया था श्री नारायण गुरु. ये हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली जब आप सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट पढ़ते हो हिस्ट्री में तो वहाँ पे वन ऑफ द रिफॉर्मर इज सोशल दिस श्री नारायण गुरु. ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ से पता हो. अब क्वेश्चन श्री नारायण गुरु से रिलेटेड अगर आ गया पेपर में तो वी थिंक कि ये कैसे आ गया एकदम से. तो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट कि न्यूज़ में कहीं ना कहीं वो चीज़ रही है एंड इसलिए आपसे यूपीएससी कहीं उनसे रिलेटेड ठीक है क्वेश्चन पूछ रही है. बाकी डिटेल्स में आप ऑफ कोर्स डिटेल हिस्ट्री में आप डिटेल में पढ़ोगे इनके इस रिफॉर्म के बारे में पर्टिकुलरली. ठीक है, सो दिस इज द 169th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ श्री नारायण गुरु. श्री नारायण गुरु ने एसएनडीपी बनाई थी, श्री नारायण धर्म परिपालना सभा ऐसे समिति. ठीक है, fine. Apart from this, and this movement particularly नारायण गुरु की जो थी that was against the caste system. ठीक है, oppressive caste system. So that's it. इतना बस ध्यान रखना है इससे रिलेटेड. बाकी आपको हिस्ट्री में इसकी डिटेल पढ़ाई जाएगी. Okay, apart from that you have politics only. Let us not go into that. Okay, here you have the city page. ठीक है, from Delhi. So those from Delhi do have a look at it, otherwise rest can skip. Okay,
लेट अस गो टू द एडिटोरियल पेज. ओके, सो एडिटोरियल पेज से आज दोनों ही ये इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज रिलेटेड टू द मैपिंग टाइज. सो मैपिंग टाइज, यहाँ पे मैप्स की बात कर रहे हैं हम. समझ गए होंगे कि आप हो क्या रहा है कि चाइना ने, जैसे कि पिछले 2 दिन भी हमने इसको डिस्कस किया था कि समवॉट चाइना ने एक न्यू मैप रिलीज की है जो कि हर साल करता है चाइना ऐसे रूटीन. चाइना से चाइनीज दिस फॉरेन मिनिस्ट्री सेड दिस इज आवर रूटीन वर्क. ठीक है, हम रूटीन में ऐसी मैप रिलीज करते हैं तो इंडिया को कोई खास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, रादर काम रहना चाहिए. दिस इज व्हाट चाइना सेड. बट चाइना की दूसरी साइड भी अभी डिस्कस करेंगे हम. सो चाइना ने जो मैप रिलीज की है न्यू, उसमें क्या किया है कि अल्टीमेटली इसने साउथ चाइना सी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश एंड अक्साई चीन, इन तीनों को अपनी बॉर्डर में दिखाया, मीन्स अपनी एरिया में दिखाया कि इसकी टेरिटरी है. ठीक है, बट समवॉट बिकॉज अरुणाचल प्रदेश को चाइना जो है वो साउथ तिब्बत मानता है, अक्साई चीन वो पार्ट है जो पीओके से लगता है, एंड समवॉट इसको पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दिया था. ठीक है, आफ्टर कैप्चरिंग अक्साई चीन एरिया इन द वॉर्स ऑफ 1948. ठीक है, 1948. सो आफ्टर दैट दिस इज, बट सिर्फ इंडिया की नहीं, और भी कंट्रीज हैं जिनको की प्रॉब्लम है इस जो न्यू मैप रिलीज की, स्पेशली टू द साउथ चाइना सी, दैट इज इन मलेशिया, ताइवान एंड इवन फिलीपींस. ठीक है, सो चाइना मस्ट शो इट्स नेबर्स द सेंसिटिविटी दैट इट डिमांड्स ऑफ देम. ठीक है, तो जो आप चाहते हो वैसे ही आपको बर्ताव दूसरों के साथ भी करनी चाहिए, नहीं. So week after the first conversation in many months between Prime Minister and Chinese President Xi Jinping, India and China appear nowhere near coming to any kind of understanding to repair their relations. बिल्कुल ठीक बात है कि हमने देखा था कि काफी टाइम के बाद our Prime Minister and the Xi Jinping President of China actually met in person in the latest recently concluded BRICS summit in South Africa. सो वहाँ से एक होप थी कि कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव इंडिया चाइना के रिलेशन में देखने को मिलेगा. बट उसके बाद जो चाइना ने किया ऑन August 28 प्रोबेबली, सो उस दिन जो मैप रिलीज की थी, यस, उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिस हैज नाउ कास्टेड अ शेडो ऑन द improving relation between India and China. Apart from that, कि 9th and 10th of September we are going to host this year's this G20 presidency. Of course, we are the chair for this year's G20 summit. So therefore, this whole episode somewhat may cast a shadow over the this coming of President of China Xi Jinping to India in order to take part in this summit. Already Russian president जो है वो नहीं आ रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन. ठीक है, so he could be the second state head who might not join this year's summit. So on the contrary, relations this week have faced yet another storm, with the two sides clashing over China issuing a new map, and reports on Thursday suggesting that Mr. Xi may skip the G20 summit in New Delhi next week. ठीक है, so he may skip, no clarity yet been given by the foreign ministry of China itself. ठीक है, so this is a wait and watch moment. So on August 28, remember जो अभी के रिलेशन है ऑफ द करंटली लो लेवल्स ऑफ ट्रस्ट विद रिलेशंस आर्गुएबली एट देयर लोएस्ट सिंस द नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज इन 1980s. ठीक है, सो अभी जो रिलेशंस दोनों की जो करंट स्टेटस है इन रिलेशन, समव्हाट इट हैज बीन लेवल्ड एज लोएस्ट सिंस द नॉर्मलाइजेशन, जब नॉर्मल हुई थी टाइज ऑफ द पोस्ट वॉर ऑफ 1962 बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन द 1980s. सो अगस्त 28 बात कर चुका हूँ. स्टैंडर्ड मैप रिलीज की थी चाइना ने फॉर 23 एंड इन एरियाज को दिखाया था अपने आप. ठीक है, एंड कंट्रीज भी मैं मेंशन कर चुका हूँ. प्रोटेस्ट वाज रजिस्टर्ड फ्रॉम इंडिया, मलेशिया एंड फिलीपींस. ठीक है, बट बीजिंग ने क्या क्या डिफेंड किया था इसको कि द मैप एज अ रूटीन एंड आस्क इंडिया नॉट टू ओवर इंटरप्रेट इट. फाइन, बट सिमिलर केस हुआ था जब आपके 2019 में व्हेन इंडिया in 2019 issued a new map following the internal reorganization of Jammu and Kashmir and the creation of new unit territory of Ladakh. Beijing responded with strong statements and initiated discussions at the United Nations Security Council, even though that map too did not change India's external boundaries or territorial claims vis-a-vis China. So ये देखो, यहाँ पे चाइना कहता है कि इंडिया को शांत रहने के लिए, और खुद 2019 में जब हमने यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर की लद्दाख को, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंच गया, क्योंकि परमानेंट मेंबर है चाइना वहाँ के, तो कहीं भी जा सकता है. सो इसलिए वहाँ पे जाके फिर कहना शुरू कर दिया कि अब इस पर हम डिस्कशन करते हैं कि इंडिया ने जो किया वो ठीक नहीं किया. सो सी
द डिफरेंसेस इन द अप्रोच, ठीक है, कि आप करो तो ठीक है पर हम करें तो गलत है। यही होता है वैसे दुनिया में। हाँ, तो चाइना भी कुछ गलत नहीं कर रहा है। ओके, ऑफ कोर्स हमारी कंट्री के पर्सपेक्टिव से गलत ही कर रहा है। ओके, सो अल्टीमेटली हियर चाइनीज इंक्रीजिंगली एग्रेसिव मोबिलाइजेशन ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी इशू है, इवन कि डोकलम विवाद भी हुआ था। डोकलम प्लेट्यू इज द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, भूटान एंड चाइना in 2017 and current जो चल ही रहा है। So leading to the ongoing crisis that has plunged relations to their low level was partly a response to India's reiteration of its claims to excise China in 2019. तो अगर LAC पे मोबिलाइजेशन देखे तो somewhat 2019 में एक्साइज चीन जब लद्दाख को एंड जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट करके यूनियन टेरिटरी बनाई गई, तो उस टाइम पे चाइना ने कहा, इंडिया ने कहा था कि somewhat एक्साइज चीन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया इटसेल्फ। तो चाइना ने इसके रिस्पॉन्स में हो सकता है कि जो मोबिलाइजेशन एंड एग्रेसिव जो नेचर है चाइना की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, वो देखने को मिल रही है। So in the recent ups and downs history of Indian ties with China, summit meetings have offered the platform for the two countries to dial down tensions by giving the two leaders the opportunity for high-level interventions, as was the case at the 2017 BRICS summit following the Doklam standoff. So yes, this this year's BRICS, summit in South Africa was an opportune moment for both the heads, our Prime Minister and President Xi Jinping, to dial down the tensions between the two countries. But on the similar lines that both of the leaders actually were successful in doing the same after the 2017 BRICS summit. ठीक है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, बाद में आप देख ही रहे हो क्या हो गया। So regardless of whether Mr. Xi visits New Delhi next week, the prospect of similar rapprochement remained dim. बिल्कुल कम है। Repairing relations will require slowly rebuilding trust on a foundation of greater mutual sensitivity. बिल्कुल ठीक बात है कि कोई भी relations को अगर repair यहाँ पे करनी है दोनों के country के बीच में, तो of course it will require slowly rebuilding the trust between the two, and this trust should be based on the foundation of greater mutual sensitivity. एक दूसरे की जो भी sensitive issues हैं उसका ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए। पता तो है बट एक्ट नहीं कर रहे। Indeed, China would do well to show its neighbors the sensitivity that it demands of them if it has any inclination towards repairing increasingly fraught relations. So, of course, the onus जो है on improving the ties with its neighbors and of course with India as well of China, so much lies on the Chinese side. Okay, next article is somewhat related to UCC, Uniform Civil Code, and this has been written in the context of, आप लोगों को पता होगा कल ही सरकार ने कहा है कि we are calling the special session of this year's the parliament actually between September 18 and 2022. So मीडिया चैनल्स पे मीडिया न्यूज़ चैनल्स पे आपने देखा होगा कि बड़े सारे उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि हाँ सरकार ये भी बिल लाएगी, यूसीसी बिल लाएगी, उसमें बड़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, वुमेन को रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है 33% या और भी काफ़ी चीज़ें। सो उसी में से एक यहाँ भी राइटर कह रहे हैं कि हो सकता है कि सरकार जो है गवर्नमेंट में ब्रिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड बाय होल्डिंग अ स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑन September 18 and 22, 2023। ठीक है, सो देयर इज अ नीड टू रीथिंक बियॉन्ड पॉलीगैमी एंड डाइवोर्स एंड अदर सच इश्यूज। इस आर्टिकल को डिस्कस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें न्यू इंसाइट है। अभी तक हमने यूसीसी जो डिस्कस किया, हमने ये पढ़ा है कि यूसीसी है क्या, ठीक है, जरूरत क्यों है, वो सब चीजें हमने डिस्कस किया इन द प्रीवियस आर्टिकल्स। बट आज जो है द फोकस ऑफ दिस आर्टिकल इज एक्चुअली द कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड और राइट ऑफ अ चाइल्ड, which is actually somewhat a child faces the kind of trauma when a child, let us say, somewhat being adopted by some other parents, ठीक है, but belongs to some other parents like biological father and mother, fine. So custody किसको मिलनी चाहिए, क्या adoptive parent जो है उनको मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, क्या सिंगल मदर या सिंगल फादर को कस्टडी मिल सकती है, या जो biological parents हैं उनकी किस हद तक राइट, ठीक है। So what exactly is the center of this article is the welfare of child, ठीक है, in such scenarios. So उसको हम डिस्कस करेंगे। A progressive UCC must protect the child's best interest. UCC जो है उसका फोकस कहाँ होना चाहिए, ऑन प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड्स बेस्ट इंटरेस्ट, ठीक है। So quickly have a look at it.
UCC cannot confine itself to merely changing the rule of the father being the natural guardian. It must go beyond this and provide for an unequivocal terms the best interest of child principle in all custody disputes. ठीक है, ये कस्टडी डिस्प्यूट्स कई बार केसेस आप देखते हो, कई बार मदर को कस्टडी दी जाती है, कई बार फादर को दी जाती है, ऐसे केसेस चलते रहते हैं इंडिया में, ठीक है, इंडियन कोर्ट्स में। तो इसलिए जरूरी है कि जो बेस्ट जो पैरामाउंट यहाँ पे प्रिंसिपल होना चाहिए इन सच काइंड ऑफ यूसीसी दैट गवर्नमेंट may be thinking of bringing one or introducing in this special session, let us say the focus should be the child's interest. So it must deny absolute rights of biological parents vis-a-vis adoptive parents. And ये भी कह रहे हैं कि जो UCC इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होगी, it must deny absolute rights of biological parents. कई बार ये होता है कि हाँ बायोलॉजिकल पेरेंट कोई और है एंड इवन कि मदर एंड फादर सेपरेटेड हो गए हैं, फिर भी कई बार कोर्ट्स क्या करती हैं, हम देखेंगे इसमें एग्जांपल्स भी मेंशन्ड है कि अल्टीमेटली कोर्ट्स ने अपने वर्डिक्ट में क्या कहा कि द चाइल्ड बिलोंग्स टू द बायोलॉजिकल फादर लेट अस से एंड नॉट द अडॉप्टिव पेरेंट्स। सो उन केसेस में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है, तो इसलिए कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट जो डिनाई राइट्स है उसकी डिनायल हो सकती है और करनी भी चाहिए इन द सेंस ऑफ बायोलॉजिकल फादर्स विद रिस्पेक्ट टू द अडॉप्टिव पेरेंट्स। So there is an act in India called Guardians and Wards Act 1819 considers the welfare of the child as the prime consideration in the determination of custody. बिल्कुल ठीक बात है, ये करना भी चाहिए, नाम भी यही है कि Guardians and Wards Act 1819 which considers the welfare of the child as the prime determinant or consideration in the determination of custody. Section 6 of the Hindu Minority and Guardianship Act 1956 डिक्लेयर करता है दैट द फादर एज द नेचुरल गार्डियन एंड आफ्टर हिम द मदर। ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने दो चीजें मेंशन की कि हिंदू लॉ में क्या मेंशन है एंड मुस्लिम लॉ में क्या है। ठीक है, तो उन दोनों को हम पहले डिफरेंस देखेंगे। सो सबसे पहले हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 है, उसके अकॉर्डिंग फादर जो है ही इज द नेचुरल गार्डियन ऑफ अ चाइल्ड, फाइन, एंड आफ्टर हिम द मदर। बट आफ्टर हिम का क्या मतलब? आफ्टर हिम मतलब डेथ? नो, ऐसा भी तो हो सकता है कि फादर छोड़ के चले जाए फैमिली। ठीक है, कई बारी सेपरेशन हो जाती है मदर फादर के बीच में। सो उस केस में क्या? सो ऑफ कोर्स द मदर वुड ऑर्डिनरली हैव कस्टडी टिल द चाइल्ड अटेन्स 5 years ऑफ एज। सो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि मदर की कस्टडी आफ्टर फादर लेटस से तब तक ही होगी या पहले जब तक वो चाइल्ड 5 साल का नहीं हो जाता। द पर्सन वुड लूज कस्टडी इफ ही और शी सीजेस टू बी अ हिंदू। ठीक है, अगर आप धर्म परिवर्तन कर लेते हो, कन्वर्ट कर लेते हो अपने आप को, तो ऑफ कोर्स यू लूज द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड। इन गीता हरिहरन 1999 केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट एक्सप्रेशन आफ्टर हिम डज नॉट नेसेसरली मीन आफ्टर लाइफ टाइम और द डेथ ऑफ द फादर बट इंस्टेड इन द एब्सेंस ऑफ। लेटस से वो सेपरेटेड हो गए मदर से, यहाँ अब है ही नहीं, एब्सेंट है। ठीक है, so in any case it's not about after life something like that but in absence of। ठीक है, सो एक फर्स्ट डिस्टिंक्शन ये है। सेकंड चीज, चाइल्ड कस्टडी इन द बायोलॉजिकल लिंक जो इस्लामिक लॉज में है, वो यहाँ पे डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू द हिंदूज कि कस्टडी अंडर इस्लामिक लॉ इज द राइट ऑफ द चाइल्ड एंड नॉट ऑफ द पेरेंट्स। जैसा कि हिंदू लॉज में है, वहां पे पेरेंट्स की राइट डिफाइन की गई है, ना कि चाइल्ड की। बट इस्लामिक लॉज में जो राइट्स डिफाइंड है चाइल्ड की है, ना कि पेरेंट्स की। इनफैक्ट द फादर इज एट नंबर 6 इन टर्म्स ऑफ द राइट टू कस्टडी आफ्टर द मदर। ठीक है, सो इस्लामिक लॉज में फादर की जो नंबर है फॉर कस्टडी वो 6वें नंबर पे आती है, जबकि हिंदूज में सबसे पहले जो राइट है वो फादर की है। ठीक है, सो इन इस्लाम सबसे पहले आप देख सकते हो 6 नंबर पे फादर की कस्टडी राइट्स आती है, आफ्टर मदर, मदर्स मदर, हाउसोएवर हाई, पैटर्नल ग्रैंडमदर, सिस्टर, मैटरनल आंट एंड पैटर्नल आंट। सो इन सब के बाद 6वें नंबर पे फादर की कस्टडी की राइट आती है। ओके, अंडर द हनाफी स्कूल क्या? इट इज वन ऑफ द 4 सुन्नी इस्लामिक लॉज। शिया एंड सुन्नी दो डिवीजन है मुस्लिम इस्लाम के बीच में। सो ऑफ कोर्स समवॉट दिस इज द स्कूल और द सुन्नी स्कूल ऑफ लॉ। दिस इज वन ऑफ द 4 schools. The mother does not lose custody after she ceases to be a Muslim. ठीक है, हिंदू में हमने देखा क्या है कि अगर हिंदू ने कन्वर्ट करा लिया अपने आप को तो कस्टडी जो राइट्स हैं वो आप लूज कर जाते हो, बट इस्लाम में ऐसा नहीं है। ठीक है,
So Islamic law gave custody to the mother till a boy attains 7 years and a daughter till she is 17. जबकि हिंदू में सिर्फ 5 years तक है. Under the Hanafi school, the Shafi and Hanbali schools, these are the second and third, Sunni schools of law, you can say, gave custody to the mother till a daughter is married. Under the Maliki school, this is the fourth one I was talking about. The mother gets custody of even a male child till puberty and female child till her marriage. Thereafter, the child gets the right to make a choice. So this is the basic point of distinction है जो हिंदू में laws में and मुस्लिम laws में देखने को हमें मिल रही है. ठीक है. Now let us consider the issues that are far more complex than custody claims between father and mother. That is the claims of biological parents after adoption and of an accused of rape biological father. So इस आर्टिकल में जो पूरा फोकस है वो इस पे कि let us focus on the claims of biological parents. ठीक है. After adoption, suppose बायोलॉजिकल पेरेंट्स उन्होंने अपने बच्चे को छोड़ दिया, लेट अस से. ठीक है, होता है, दिस इज अ रियलिटी इन इंडिया. आई मीन देखने को मिल जाते हैं केसेस इस तरह के. एंड उसको क्या है कि फिर उस बच्चे को चाइल्ड केयर लेटर से में ले जाया गया, वहाँ पे फिर रखा गया. उसके बाद लेटर से किसी पेरेंट ने अडॉप्ट कर लिया उस बच्चे को. बट हुआ क्या कि काफी कुछ समय के बाद बायोलॉजिकल पेरेंट्स दोबारा पहुंच जाते हैं कि नहीं, ये बच्चा हमारा है, हमें वापस मिलना चाहिए. सो दिस इज व्हाट ही इज गोइंग टू डिस्कस. एंड सेकेंड पार्ट इज द क्लेम्स ऑफ एन एक्यूज्ड ऑफ रेप बायोलॉजिकल फादर. ठीक है, कि कई बार क्या होता है कि आउट ऑफ रेप केसेस एंड एक्यूज्ड ऑफ रेप, लेट अस से हैविंग फिजिकल रिलेशन, उसमें से अगर आउट ऑफ बिकॉज ऑफ दिस नेग्लेक्शन एंड ऑल, लेट अस से अगर resulting in a child, so of course what would be the claim of that accused father of who is himself is an accused of rape. ठीक है, so इन दो केसेस basically ग्राउंड पे इस पूरे आर्टिकल को अब डिस्कस कर रहे हैं in the next part. So Indian courts are attaching greater importance now to the claims of biological parents. The first conclusion is, जो ये कह रहे हैं कि इंडियन कोर्ट्स जो है वो अडॉप्टिव पेरेंट्स की नहीं, रादर मोर जो वैल्यू है उसको किसको अटैच दे रही हैं, दैट इज attaching greater importance now to the claims of biological parents in preference to the adoptive parents without due consideration to the best of the welfare of the child. So this is the first thing. इसमें एग्जांपल भी दे रहे हैं कि on July 26, 2023, this year only, two women judges of the Bombay High Court ordered that the custody of a child who had already been adopted to be given to the biological father, and this biological father was actually accused of rape which resulted in this child being born. ठीक है, बट फिर भी कोर्ट ने ये कहा कि कस्टडी जो है वो इसी को दे दी जाए. ठीक है, even though the child was adopted already. But in October 2021, the 17-year-old biological mother, on realizing that she was pregnant, is alleged to have eloped with him and gave birth to a boy on November 26, 2021. जो इस केस की बात कर रहे हैं, तो इसी में समझ गए आप कि जो चाइल्ड हुआ that is out of this father who was actually accused of rape. So this was a kind of relation out of which the child actually born and was later on adopted by some other parents. But Bombay High Court ने कहा कि नहीं, this child belongs to the biological father who was accused of rape. ठीक है. So this is the issue he is raising actually. So based on complaint by the minor mother's father, ठीक है, so जो mother थी वो minor थी, so based on his father's complaint alleging rape and various crimes under the POCSO Act 2012, the biological father was arrested but was granted bail later, and even later on he got the custody of the child. ठीक है, so ये चीजें इसमें mentioned है. Fine. हुआ क्या था कि सरप्राइजिंगली बायोलॉजिकल फादर को ऐसे नहीं मिल गई, राइट, इन्होंने हेबियस कॉर्पस पिटीशन डाली. हेबियस कॉर्पस पिटीशन होती है कि आप इट इज अ लैटिन फ्रेज एक्चुअली व्हिच मींस टू प्रोड्यूस द बॉडी. ठीक है, कि आपने जिसको डिटेन करके रखा है क्या वो लीगल डिटेंशन है या नहीं है, या आपने कस्टडी किसी और को दे दी, किसी और पेरेंट्स को जिन्होंने अडॉप्ट किया उसके बच्चे को, तो क्या वो लीगल अडॉप्शन थी कि नहीं थी. बिकॉज technically that child actually belongs to this father, that's why he's called biological father even though he was accused of rape. ठीक है, so the high court stayed the adoption proceedings and despite the trauma the child to child and adoptive parents, the child was actually returned to the shelter home. ठीक है, फिर CWC that is
CWC क्या है? चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। सो इसमें क्या हुआ? In July, CWC rejected the biological father's application for custody on the ground that biological father cannot take advantage of his own crime and giving custody to him would not be in the best interest of the child. So CWC ने ये अपने जो भी डिनाइल थी उसमें रिजेक्टिंग दिस क्लेम ऑफ द बायोलॉजिकल फादर ये अपनी नोटिंग दी, बट इसको साइडलाइन करते हुए हाई कोर्ट ने क्या किया? हैंडेड ओवर कस्टडी ऑफ द चाइल्ड टू द बायोलॉजिकल फादर विदाउट हियरिंग द बायोलॉजिकल मदर. दैट्स द इशू. ठीक है, because mother was actually opposed to giving the child to the biological father. The requirement of consent of the rapist father in such adoptions would set the wrong precedent. This is was saying wrong example कि मदर की कंसेंट नहीं ली गई, इसमें कंसेंट किसकी ली गई या किसको दे दिया गया? चाइल्ड रेपिस्ट फादर को. ठीक है. So a case of adoption now. Similarly, in Nasreen Begum 2022 case, a two-judge bench of the Allahabad High Court gave the custody of a girl child to her biological parents in preference to the rights of the adoptive parents. ठीक है, यहाँ पे भी एक adopted 12-year child थी, गर्ल child थी actually, and हुआ क्या कि ultimately the custody was given to the biological father parents later on in preference to the rights of the adoptive parents. So again देखते हो कि अडॉप्शन के बाद दोबारा से आप राइट जिसको दे रहे हो बायोलॉजिकल फादर को. ऑफ कोर्स दिस विल समवॉट डिस्करेज दिस प्रैक्टिस ऑफ अडॉप्शन, इजंट इट? कि अडॉप्शन भी कर लिया कुछ साल, ठीक ठाक सब चला, एंड बाद में फिर कोर्ट की जजमेंट ये जाती है कि भाई वापस कर दो, जो अडॉप्ट किया था बायोलॉजिकल पेरेंट जो है उससे वो बिलोंग करता है चाइल्ड. ठीक है, तो समवॉट दिस वुड डिस्करेज दिस प्रैक्टिस ऑफ अडॉप्टिंग अ चाइल्ड. तो हुआ क्या इसमें? द फैमिली कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्टिमनी ऑफ द चाइल्ड नाउ 6 years old and in the best interest of the child had decided in favor of the adoptive parents. So see, यहाँ पे फैमिली कोर्ट ने जो डिसाइड किया, that was a good, you can say this judgment because it decided in the favor of adoptive parents, not the biological parents. The biological parents asserted that mere custody of some time was given to the adoptive parents. Does not section 2 clause 2 of the JJ Act, that is Juvenile Justice Act, provide that adoption completely severs the ties between the biological parents and the child. अगर adoption होगी तो उसके बाद biological parents and child के relation ही खत्म है, सीधी सी बात है. This is what he is asking, question mark. Why would any parent leave a 3-month-old child in another country without the child being given in adoption? So the family court rightly concluded that the children cannot be treated as a chattel and property, that is belongingness, of their biological parents, and she should not undergo the trauma of separation from her adoptive parents who had given her all the love and care over 6 years or so. बिल्कुल ठीक बात है. अल्टीमेटली अडॉप्टिव पेरेंट्स में उनको क्या मिला अगर वापस बच्चा बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास चला जाता है? तो अगर ऐसा ही करना था फिर छोड़ के क्यों गए? सीधी सी बात है. So the trauma which a child and its adoptive parents would undergo was not given much consideration through the court. Though the court did acknowledge that the child would undergo some difficulty in the beginning due to separation from the adoptive parents. ठीक है, यहाँ पे हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं. So the court gave much importance to the right of the child to know her real identity and the right of her biological parents to her custody, and not the rights of her adoptive parents. The court rather moved on the premise that there was no legal adoption and therefore the adoptive parents having no right in respect of the child. But the Bombay High Court in Iftikhar, another case 2021, ignored that the fact of adoption was not valid in terms of Muslim law. The court, in the interest of the child, had refused to give custody to the biological parents as the adoptive parents were given a 5-day-old child. It was only because of their care that the child recovered from the jaundice. ठीक है, तो कोर्ट ने इतना कुछ रीजनिंग को अकाउंट में नहीं लिया एंड ये कह दिया अपने जजमेंट की कि ऑफ कोर्स द चाइल्ड बिलोंग्स टू द बायोलॉजिकल पेरेंट्स. ठीक है, a progressive UCC therefore should not overemphasize biological ties. It must protect the rights of the adoptive parents. Otherwise, the people who would not adopt the children, of course. Similarly, it should not insist on the matrimonial bond between the parents and should ideally make provision of guardianships even for a single parent, surrogate parent and queer parents. Queer, of course, like transgender and all, gay, bisexual and all. And surrogate parent होते हैं जो दूसरे के लिए
on surrogacy. Basically, this comes from surrogacy when you're, let us say, having a child for someone else, for someone else. Okay. Okay. So this is a good article. Little bit, the differentiating between Hindu and Muslim laws and all, and even giving you the case laws as well, insights as well. So good piece of article. Next is, are natural disasters man-made? So आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा. तो आज दो लोग हैं पैनल में, that is Lubina Rangwala. She is head urban development and resilience with the World Resource Institute, and the other person is Bimal Mishra, professor of civil engineering at IIT Gandhinagar. ठीक है. So first question is, to what extent are natural disasters man-made? So the first, Rangwala ji कहती हैं, the scale of natural disasters that we now see across the world are definitely man-made. ठीक है. विशाल मिश्रा जी क्या कहते हैं, humans have played an important role in enhancing the risk from climate hazards. So दोनों की conclusion यही है. So humans are of course responsible, not fully, but we have played a considerable part in increasing the problem, but we should find solutions and learn from our failures. ठीक है. So while natural variability and anthropogenic causes, anthropogenic caused by man, especially human beings, have a role to play, India was affected by natural disasters even before the framing of climate change as a catalyst. Whether excessive flooding in Mumbai or landslides in the hills, do you see disaster preparedness having evolved over the years? This question is related to कि even after seeing this much of natural disasters and all, do you think our preparation on this disaster preparedness is enough or evolved over the years? So there are a few different ways in which the landscape of disasters in India has changed. We are constantly talking about the importance of urban planning and how the movement of people to urban centers has affected natural landscapes. बिल्कुल ठीक बात है कि अर्बन प्लानिंग होती है या अर्बनाइजेशन होने की वजह से जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहरों में जाते हैं तो नीड बढ़ जाती है. एक्चुअली हर चीज़ की डिमांड बढ़ती है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ की एंड ऑल, एंड ऑफ कोर्स एरिया तो लिमिटेड है ना, उसको आप कहाँ तक बढ़ाओगे. सो किसी भी शहर की सपोज उसकी एरिया तो सेम है, तो ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ एक्सेसिव प्रेशर्स आप घर वहाँ भी बना देते हो जहाँ पे नहीं बनानी चाहिए. लेट अस से हिली एरियाज या कैचमेंट एरियाज एंड वाटर बॉडीज जहाँ पे हो. ठीक है. सो अल्टीमेटली वी सी द फॉल आउट ऑफ ऑल दिस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मुंबई में जैसे हमें देखने को मिलता है, इन मुंबई वी हैव सीन फ्लड्स and the city has continued to grow. Mumbai has its own disaster management agency. It has been engaging with the Indian Institute of Tropical Meteorology, which develop models to predict floods better. Also, the Brihan Mumbai Municipal Corporation (BMC) Stormwater Drainage Department has in the last decade built larger water holding tanks. ठीक है. So Mumbai has been able to perform much better in this regard than say Delhi, which is seeing recurrent floods. ठीक है. सो प्रिपेयर्डनेस अगर बेटर होगी तो ऑफ कोर्स रिजल्ट्स हमें बेटर देखने को मिलेंगे. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग विद रिस्पेक्ट टू द मुंबई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन वन सेंस aren't we caught between the devil and deep sea? If you consider the historical development of cities everywhere, it is a story of urbanization only. ठीक है. Then what's the issue with urbanization? So development translates to infrastructure growth, of course. However, we don't pay enough attention to whether our development pathways are sustainable. So of course, urbanization and everything is fine, but provided we have sustainable development, that we are taking care of environment as well in this development process. So development and environment must go hand in hand. Fine. That is, in short, you can say sustainable development. So next, रंगवाल जो मैम है वो कहती हैं, आई डोंट थिंक वी आर एट द डेड एंड, वी आर डेवलपिंग एंड ग्रोइंग एंड पीपल विल नीड हाउसेज, जॉब्स एंड सर्विसेज, बट as Dr. Mishra said, we have allowed certain businesses as usual practices to proceed in city planning. So therefore we this again BMC की एग्जांपल देते हैं यहाँ पे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज डिपार्टमेंट की. ठीक है. We are building codes to determine how and where structures and roads ought to be constructed. But still, somewhat, already there is existence of knowledge, information, but still there is somewhat ignorance, you can say, or is there genuinely a lack of knowledge among city planners in terms of accounting for climate hazards and natural disasters? So knowledge is never complete. बिल्कुल ठीक बात है. We learn new things every day and have some knowledge from past events as well, but
The challenge is most often from a lack of awareness or from ignoring a risk. Yes, this is the biggest factor. ठीक है, knowledge complete नहीं है, but still the challenge comes out of this lack of awareness or from ignoring a risk factor. ठीक है. Okay, so this is the only thing. सो ऑफ कोर्स इसमें नेक्स्ट मेंशन है कि हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं, हम एग्जांपल अगर ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमें अगर हाईवे बनानी है माउंटेन रीजन में, तो हमें रिस्क असेसमेंट करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंगली वी नीड टू टेक द एक्शन. जैसे हमने चार धाम जो प्रोजेक्ट जो विकास मार्ग परियोजना चल रहा है उसकी भी हमने डिस्कशन की थी जस्ट 2-3 डेज बैक. सो उसमें भी हमने देखा था कि उसका फॉलो आउट हमें देखने को मिल रहा है इन उत्तराखंड. ठीक है, तो नाउ लेट अस हैव मिसलेनियस लेंसेज या अदानी सागा एंड ऑल दोबारा से, तो उसको ऐसा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं. Okay, so this is the issue. Of course, the Chinese presidency yet to confirm presence at G20 summit in Delhi. As I said कि अभी तक confirm नहीं की गई है ये बात Chinese side से. So of course this is a wait and watch moment. Five more killed in Manipur. Police say situation tense but under control. No end to Manipur violence. E-buses will be allotted to cities based on population. हमने एक बात की थी, न्यू जो स्कीम लेके गवर्नमेंट आई है, 10,000 इलेक्ट्रिक buses under the PM E-bus सेवा scheme would carry a uniform branding provided by the union government and would be allocated based on the population of a particular city. ठीक है, so क्या है इसमें? According to the Ministry of Urban this Housing and Urban Poverty Alleviation, 169 eligible cities would be categorized into 4 groups based on whether their population was between 15 and 20 lakh, 10 and 15 lakh, and 5 and 10 lakh, or less than 5 lakh. So the first category will get 150 buses, second and third grouping 100 each, and the last 50. So इस तरह से population basis पे buses दी जाएंगी. ठीक है, okay. What else? So special session of parliament from September 18 to 22, agendas under wraps. So this has been called, and जो parliamentary affairs minister हैं प्रहलाद जोशी जी, इन्होंने कहा है कि amid अमृतकाल the government is looking forward to fruitful discussion and debate in parliament. But of course the opposition parties are susceptible, or of course even the news channels are guessing that government will be coming up with something big. So just wait and watch again. देखते हैं क्या होता है. Okay, India sees the lowest August rainfall in a century. IMD, and Jaya Verma becomes the first woman to head railway board. So she is the first woman going to head the topmost decision making board of the railways, that is railway, of course railway board. ठीक है, she will be replacing Anil Kumar Lahoti, who was till now the chief of this railway board, chairman. Okay, next. West continues to exploit resources in developing countries, said by Russian diplomat. एक बात भी है, चंद्रयान प्रूव ने आफ्टर सल्फर एंड ऑल ऑक्सीजन अब फाइंड किया है स्पार्स प्लाज्मा ऑन मून. ठीक है, तो धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें इसमें डिस्क्लोज होती जा रही हैं. सो चंद्रयान 3 जो लैंडर है विक्रम completed the first in situ measurements of the surface bound lunar plasma environment over the south polar region. The radio anatomy of moon bound hypersensitive ionosphere and atmosphere Langmuir proof. तो जिसमें हमने बात की थी पेलोड जो गई हैं उसमें जो आपका एक रामभा एलपी भी नेम्ड है. ठीक है, तो इसने इस चीज़ को की सर्च की है. It was named
after American chemist Irving Langmuir, who was awarded the Nobel Prize in Chemistry. So is a device used for characterizing plasma. So याद रखना कि Langmuir जो थे he was American chemist, ठीक है, जिनको कि नोबेल प्राइज में दी गई थी केमिस्ट्री की फील्ड में. उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, रमन मैग्सेसे अवार्ड. दिस इज इक्विवेलेंट टू द दिस एशियन नोबेल प्राइज, ठीक है. इट इज नेम्ड आफ्टर द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस, रमन मैग्सेसे, and this is awarded every year, and for this 2023 this has been awarded to the surgical oncologist who deals with the cancers. Name is R. Ravi Kannan, ठीक है. So he is the director of the this Chacher Cancer Hospital and Research Center, Assam, ठीक है. So he got the Raman Magsaysay Award winner for 2023. He is किस लिए इनको मिला है? So he is credited with revolutionizing cancer treatment in Assam through people centering and pro poor health care, ठीक है. So इसलिए इनको इस साल का जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है वो दिया गया है. Next, the world page. After India, Philippines, Malaysia and Indonesia protest China's map. So देख सकते हो इसमें इंडोनेशिया भी शामिल हो गया है. Okay. अदानी शेयर्स फॉलो तो होने ही हैं आफ्टर दिस रेवोल्यूशन. Will review cotton import levy after talks with farm industry. So ये कहा है हमारे यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर ने. कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हैं ये. Now finally we are on the sports page. So that's it as far as today's this Hindu discussion is concerned. Let us have a look at the questions from today's analysis itself. Today is 1st of September and here questions, first for prelims, second for mains. These are the two questions. The Raman Magsaysay Award is Asia's highest honor and is considered Asia's version of the Nobel Prize. Second statement is the award is named after the third president of the Republic of Indonesia, Raman Del Ferro Magsaysay, and Assam-based oncologist, GIST, missing here. Please mark it, correct it. Okay. Oncologist, GIST, please correct it. Ravi Kannan is the winner of 2023 Raman Magsaysay Award. I think अभी आप इसको correct आंसर मार्क कर दोगे जो हमने डिस्कस किया. And second question is, a progressive UCC should not overemphasize biological ties. It must protect the rights of adoptive parents as well. So you need to critically examine this for 10 marker again to be written in 150 words. So that's it from my side. If you have any query, anything, you can put the same in the comment section. Until then, keep revising, take care, and stay tuned for the tomorrow's Hindu analysis. Thank you.